अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 2026 के वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर शेयर करेंगे। ये वो करंट अफेयर हैं जो आने वाले पेपरों और इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आप किसी पेपर या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर पढ़ें ताकि आपका पेपर और इंटरव्यू कवर हो सके। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सब्जेक्ट और जितने भी सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड होते हैं वो तमाम सब्जेक्ट जो हमने अपने फुल कोर्स में इंक्लूड कर दिए हैं। और अगर आप इस फुल कोर्स को हमसे लेना चाहते हैं तो आप दिए गए इस व्हाट्सअप नंबर पर हमसे रब्ता करें, हम आपको PDF में प्रोवाइड कर देंगे। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वो किसी भी जॉब टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। The Lebanese castle named Beaufort has been captured by which country? Option A, Yemen. Option B, Israel. Option C, Saudi Arabia. Option D, none of these. The correct answer is Israel. नेक्स्ट क्वेश्चन। Who is the current Prime Minister of the United Kingdom? UK. Option A, Andy Burnham. Option B, Keir Starmer. Option C, Boris Johnson. Option D, none of these. The correct answer is Keir Starmer. नेक्स्ट क्वेश्चन। The final of FIFA World Cup 2026 between Spain and Argentina was hosted by which country? Option A, Canada. Option B, Mexico. Option C, USA. Option D, none of these. The correct answer is USA. नेक्स्ट क्वेश्चन। The 2030 FIFA World Cup will be played in which country or countries? Option A, Morocco. Portugal and Spain. Option B, Brazil and Argentina. Option C, United States. Mexico and Canada. Option D, none of these. The correct answer is Morocco, Portugal and Spain. नेक्स्ट क्वेश्चन। Which player confirmed that the FIFA World Cup 2026 was his final World Cup appearance? Option A, Cristiano Ronaldo. Option B, Neymar. Option C, Manuel Neuer. Option D, all of these. The correct answer is all of these. नेक्स्ट क्वेश्चन। Who is the current Prime Minister of Ukraine? Option A, Vadim Prystaiko. Option B, Serhei Koretsky. Option C, Denys Shmyhal. Option D, none of these. The correct answer is Denys Shmyhal. नेक्स्ट क्वेश्चन। How much prize money will the winner of the FIFA World Cup 2026 receive? Option A, $100 million. Option B, $50 million. Option C, $75 million. Option D, none of these. The correct answer is none of these. नेक्स्ट क्वेश्चन। When is International Justice Day observed? Option A, July 17th. Option B, July 27th. Option C, July 7th. Option D, none of these. The correct answer is July 17th. नेक्स्ट क्वेश्चन। World Badminton Day is celebrated every year on which day? Option A, July 4th. Option B, July 5th.
Option C, July 6th. Option D, none of these. The correct answer is July 5th. Next question. Which country defeated England to win the Women's T20 World Cup for the record 7th time? Option A, New Zealand. Option B, Australia. Option C, South Africa. Option D, none of these. The correct answer is Australia. Next question. Name the former Emir of Qatar who passed away in July 2026 at the age of 74. Option A, Sheikh Jabir bin Hayyan. Option B, Hamad bin Khalifa Al Thani. Option C, Sheikh Ahmed Noman. Option D, none of these. The correct answer is none of these. Next question. Who is the current president of Argentina? Option A, Mauricio Macri. Option B, Alberto Fernandez. Option C, Javier Milei. Option D, none of these. The correct answer is Javier Milei. Next question. Which country won the 2026 FIFA World Cup by defeating Argentina in the final? Option A, France. Option B, Brazil. Option C, Spain. Option D, none of these. The correct answer is Spain. Next question. What is the official mascot of Glasgow 2026 Commonwealth Games 2026? Option A, Clyde. Option B, Barobi. Option C, Finney. Option D, none of these. The correct answer is Finney. Next question. Which country will host Commonwealth Games 2026? Option A, Australia. Option B, Scotland. Option C, England. Option D, none of these. The correct answer is Scotland. Next question. Which of the following has become the first European Union? EU. Country to ban social media access for children under 15 years? Option A, Finland. Option B, Iceland. Option C, France. Option D, none of these. The correct answer is France. Next question. What is the theme of World Youth Skills Day 2025? Option A, Skills for a Resilient Youth. Option B, Transforming Youth Skills for the Future. Option C, Local Youth Actions for the SDGs and Beyond. Option D, none of these. The correct answer is Local Youth Actions for the SDGs and Beyond. Next question. What is the theme of World Youth Skills Day 2026? Option A, Skills for a Resilient Youth. Option B, Skills for a Shared Future. Option C, Transforming Youth Skills for the Future. Option D, none of these. The correct answer is Skills for a Shared Future. Next question. On what date is World Youth Skills Day celebrated? Option A, July 5th. Option B, July 10th. Option C, July 15th.
Option D. None of these. The correct answer is July 15th. Next question. As per Global Terrorism Index 2026, which country is ranked the most terrorism affected? Option A. Pakistan. Option B. Afghanistan. Option C. Russia. Option D. None of these. The correct answer is Afghanistan. आई होप आप दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर वो किसी भी जॉब टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो। और अगर आपने शुरू से लेकर एंड तक वीडियो वॉच की है तो आपने अपना स्कोर ज़रूर कमेंट में मेंशन करना है कि आपके अंदाजे में कितने क्वेश्चन जो थे वो राइट थे और आपने कितने रॉन्ग किए हैं और कितने राइट किए हैं, ये आपने ज़रूर कमेंट में मेंशन करना था। अल्लाह हाफिज़।